Brilliant presence of mind. What was he thinking? Come on. Humpy Heroes are the stars here, and what was Ankit Surinder actually thinking? He was actually thinking, when do I go back to the hotel room and have dinner? That's what he was thinking, I guess. जी हो सकता है शायद, परंतु निश्चित तौर पर अगर आपके दिमाग में वो 34 पॉइंट का वो जो बैरियर है ना, जो आपको चौथे पायदान पर जाने के लिए रोक सकता है, वो जीत, और 34 पॉइंट से वो जीत, अगर आप उसे सोच रहे होते तो शायद आप निश्चित तौर पर इस तरह की गलती नहीं करना चाहेंगे। परंतु चलिए, अभी तो महज शुरुआत है। आप उम्मीदें रखते हैं यहाँ पर अनीश से कि वो निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए बेहतर करें। आप उम्मीद रखेंगे वहां पर सागर से कि अच्छा प्रदर्शन करें। नितिन धनकर को जितने समय के लिए ऑफ कोर्ट रखेंगे उतना आसान बन सकता है पेरियार पैंथर्स के लिए जीतना। परंतु 34 पॉइंट, नवीन, प्रैक्टिकली आपसे जानता हूं कि क्या आप इसे देख रहे हैं? No, it's not possible. See, let's not give false hopes for the Periyar Panthers unit and the fans of Periyar Panthers. See, it's completely not possible, and not possible even when you've got Humpy Heroes in front of you, and even now you're not off the mark. You're still on 0 for the Periyar Panthers, and Humpy Heroes already have begun this run feast, or the raid feast I should say, with 5, and Periyar Panthers lagging behind with 2. So it is not possible. But what I will say is, it's a good match to have in the last match of the challenger round, where you can get a lot of confidence like this, like such tackles, and putting the someone like there you go. जी हाँ, पर यहाँ पर what has happened there? Oh. Yes, Naveen. Yes, sorry. So what just happened is the question, because the points was given away as 1 point to the Humpy Heroes and 2 points, of course, Periyar Panthers not going off. Oh, I think Rohit Raghav actually stepped into the lobby even before the tackle. Oh, that's the reason. That is the reason why the 2 points. I thought confidence would have been coming in by that tackle by Anish. But wrong time. Rohit Raghav unintentionally going into the lobby, no intention whatsoever. He goes into the lobby without a connection, and then 2 more defenders go behind him. As these two jerseys may look very familiar for people watching here on FanCode. Let me just clarify this for you. More purple is Periyar Panthers, and more black is Humpy Heroes. They're very similar colors to differentiate in the first go. They look very familiar, but now this is Nitin Dhankar raiding for the Humpy Heroes. जी हाँ, नितिन धनकर नजर आएंगे। और देखिए, अगर आज आशीष नरवाल होते ना तो डिफरेंशिएट करने में इतनी हमको मेहनत लगती नहीं, क्योंकि हम एक तरफ कह सकते थे कि चलिए हम्पी हीरोज के पास नितिन धनकर हैं, पेरियार पैंथर्स के पास आशीष नरवाल है। और नवीन, आपने जरूर शायद वहां पर अभी तक देखा होगा कि आज आपको कोच साहब का वो जो कॉर्नर नजर आता है उसमें मोहित हुड्डा जी मौजूद नहीं दिख रहे हैं। Yeah, not there, because I'm sure he's preparing for the summit round along with Ashish Narwal and Naveen Sharma and the rest of them. And I really want to see if Sultan of Surprises can make a comeback, because without him, the Periyar Panthers have looked like a panther without the tearing tooth. You know, when it goes for the hunt, the panther actually uses its tearing tooth to hunt out all its prey. When Ankit is not around, that hunting tooth is missing. And Rohit Raghav, so easily on that running hand touch on the right flank, gets another point. जी हाँ, एक और बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर पॉइंट प्राप्त करते हुए नजर आएंगे मोनू जाकर, जो कि राइट कॉर्नर में मौजूद थे। रिट्रीव करने का उन्होंने अपने आप को पूरा प्रयास किया। इस खिलाड़ी पर दारोमदार है, इस खिलाड़ी को प्रकाश डालना होगा अपनी टीम के लिए, वो प्रकाश बनाकर रखना होगा। नवीन, हम सिर्फ देखना चाहते हैं पेरियार पैंथर्स से, मैंने टडोबा टाइगर से भी यही देखना चाहता था कि आप मुकाबला हारे या जीते बहुत ज़्यादा वहाँ पर महत्वपूर्ण अभी आपको लगेगा नहीं, परंतु वो इंटेंट आप देखना चाहेंगे यहाँ पर पेरियार पैंथर्स से, वो जुनून जीत का यहाँ पर आप देखना चाहेंगे पेरियार पैंथर्स से। That is what differentiate. Look at this, super tackle situation, and then Nitin Dhankar has cleaned them up. The first award inflicted on Periyar Panthers, and somewhere Rinku and along with Ujjwal, both raiders could not stop the dhamaka that Nitin Dhankar has caused, and that is the first all out for the Periyar Panthers being inflicted by the Humpy Heroes, right? So what I was trying to say was, of course, it shows the intent, that is right,
But on the other hand, it differentiates you between a super lad and a superstar kabaddi player. You know, it shows your character. It shows what you are made of. You cannot just bog down for the situations. And Mono Jaka does his best to get that 1 point. Yeah, that's beautifully done. But somewhere, what are you really made of? It sometimes decides when you perform or when you react to situations like this. And Nitin Dhankar has been substituted for a big rest by Ramesh Narwal and Akshit. Is it the man? My favorite man comes on the mat. Harshit, your favorite also after Yes. that raid. बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि अक्षय तब आपको यहाँ पर नजर आएंगे, एक अच्छा फैसला यहाँ पर रमेश नरवाल जी का था, परंतु चलिए रमेश नरवाल जी के क्या फैसले को थोड़ा सा यहाँ पर सोच विचार करने पर मौका करेगा पेरियार पैंथर्स का डिफेंस के कवर से सही समय पर वहां पर आना मनोज यादव को आज मौका मिला है और निश्चित तौर पर चाहेंगे कि अपनी टीम के डिफेंस को एक बार फिर से शानदार बनाते हुए नजर आए। अब मोनो झाकड़ Yeah, very much. Sonu Latwal very slow, as that is his style, because he's not very quick on his feet, but he's very strong lad, and then not turning enough, and the left cover getting complete hold of Sonu Latwal's turn and cutting the angle out. Right, now it is time for some action. I'm really waiting to see Akshit to raid. Of course, Rohit Raghav will come in to put this raid in, and I'm really curious for Akshit's raid. As the ankle hold, has it been successful? No, they are counting men. Rohit Raghav, I guess, has got a multi-point raid of 2 points. Left corner, Ankit Surendra once again tried to take a revenge on Rohit Raghav because of that casualtiness that was caused by him, and then has to go back on the bench. Ankit Surendra just seen there walking out, putting his head down. And that's what I don't want to see. That putting the head down is what I don't want to see. That the body language, dropping shoulders is not in kabaddi. Never. And look at this. Rohit Raghav already in that left in position is ready to tackle Rinku, the left raider. He was actually lining him up. I was actually lining him up to go for that double surprise ankle holds, but did not get the angle though. Now brings in Sonu Latwal. Still waiting for Akshit here, Rashid. जी अभी तक अक्षित को वहाँ पर रेड डालने का मौका मिला नहीं है, और क्यों नहीं मिला, क्योंकि मल्टीपल रेडर्स वहाँ पर हम पे हीरोज के पास मौजूद हैं। वहाँ पर इवन नितिन धनकर चले गए हो बेंच पर सब्सिट्यूट होकर, परंतु उसके बावजूद सोनू लथवाल इस बार जरूर अच्छी तरह से यहाँ पर रोका गया है। लगातार दूसरी दफा यहाँ पर रोकते हुए नजर आएंगे सोनू लथवाल को बहुत अच्छे अंदाज से। यहाँ पर एक बार फिर से मनोज यादव ने प्रयास किया ब्लॉक का, थोड़ी दफा प्रयास भी किया, और सबसे अच्छी बात है उस एंगल को एक बार फिर से कट गया जो मिड लाइन की तरफ उनका फोर्स था, उसे लॉबी की तरफ किया, और अब डू और डाई रेड है। अब यहाँ पर मोनो जाकर के लिए डू और डाई रेड है, किस तरह से पॉइंट लाना चाहेंगे। चेक का हाउस है जरूर, यहाँ पर बोनस ऑन है, इस बार नजर आया नहीं बोनस लाइन को शायद क्रॉस करते हुए समय पर। And he will be pinned down right outside the block line. Combination tackle. First the covers pouncing on the legs, and then it made it very easy for the right corner. Look at that. Turned him around. Nitin Deswal, the captain from right cover. That's what happened even in the previous raid to Sonu Latwal. The turn was actually treated like a top. You know, when you क्या कहते हैं आप हिंदी में टॉप को, जो हम लोग जिस छोड़ते हैं जमीन पर एक रस्सी के मामले में, what do you call that? नवीन एक बार फिर से कहेंगे, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। I was just trying to say, there is in English we just say there is a top, right? There is a top that in the game that we use. Akshit, red, sent out, dashed away from the left cover. Right, I was just saying हम वो रस्सी को यूज करके एक जमीन पे फेंकते हैं ना, the top that spins around. या लट्टू। You got my point? Yeah, maybe. What is that? लट्टू, आप उसी की बात कर रहे हैं ना जो मतलब घूमता रहता है। Yes. Yeah, exactly. So that is what it happened, like the Lattu effect, where the raider is trying to turn, okay, and then you turn him across, you know, like how the raiders have got the anti-block, the defenders have also got that, you know, anti-turn. When the raider is trying to turn towards your opposite angle, you turn him more. That's what Nitin Deswal did very beautifully, and also Manoj Yadav did beautifully. That's a good skill for a defender. Naveen, not they only, but you also very rightly put across.
क्या बात है, जिस तरह से आपने भी यहाँ पर जिस तरह से रखा इस पॉइंट को, सच में लट्टू हो गया हूँ मैं भी आपकी यहाँ पर बातों का. Hey, thanks man. But I really want to see some change happening here for the Periyar Panthers. They're lagging behind by 7 points as Sagar comes into raid. See, I was happy when Monu Jakar was getting those points, but look at this. Sagar has got lot of opportunities. Sagar has got many opportunities, and he's not been able to turn this around. जी, और संदीप ने जरूर अपॉर्चुनिटी का, जिस तरह से उन्हें भी लगातार कॉर्नर का मौका नहीं दिया गया था, परंतु जिस तरह से उन्होंने भी बेंच से आकर जिस तरह से प्रदर्शन निरंतर कर रहे हैं, कई बार अप एंड डाउन आए थे, शुरुआत में कंसिस्टेंटली खेल रहे थे, और इस बार जरूर अनिश यहाँ पर कहेंगे चलिए अक्षित 2 आपकी जर्सी है, परंतु मेरे जर्सी पर एक और 2 आगे लगा हुआ है. आई एम 22 और शानदार इस बार टैकल करते हुए नजर आएंगे, और अनिश इकलौते ऐसे डिफेंडर हैं जो आज आपको अनुभव के साथ यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे. इस मुकाबले से पहले उनके पास 43 टैकल पॉइंट्स है, और जब से वो आए उनका कवर पोजीशन अच्छा नजर आया है पेरियार पैंथर्स का. जहां पर एक थोड़ा सा चिंताजनक विषय था, उसे सॉल्व आउट करता नजर आया पेरियार पैंथर्स. Very much required. Anish there being in that covers. Then once again, strong ankle hold on Akshit from the right corner. Much required. See, I'll tell you something. Akshit is a good raider. He's got good speed, and he can be a very lethal raider because this Humpy Hero side will not give you more chances. You know, when Nitin Dhankar has been substituted out and Akshit, you've been trusted by Ramesh Narwal, you'll have to deliver. You'll have to play on your strengths. And once again, Rohit Raghav gets an easy point on Ankit Surendra. So it is I think what 3-0 on Ankit Surendra now for Rohit Raghav. बिल्कुल लगातार यहाँ पर रोहित राघव शिकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं खिलाड़ियों को पेरियार पैंथर्स के. और बिल्कुल आपने सही कहा, अक्षित के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, बड़े युवा खिलाड़ी हैं. ठीक है, मैं बता देता हूँ नवीन की स्क्रीन पर फिर भी हो, और जब आप इनके चेहरे से अगर फोकस थोड़ी दफे के लिए भी अगर कैमरामैन दिखाएंगे तो बड़े युवा अवस्था में है, और जिस अंदाज में बड़ी कम उम्र में जिस तरह से सीख रहे हैं अपने साथी खिलाड़ियों से, ये तो जरूर एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर मोनू जाकर लेकर जाएंगे. आखिरकार नितिन देसवाल आज जो कि एक शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, कोई भी अभी तक अनसक्सेसफुल टैकल उन्होंने किया नहीं था, इस बार जरूर यहाँ पर टच पॉइंट लेकर आएंगे, और नितिन देसवाल कहेंगे चलिए आप भी थोड़ी देर बेंच पर बैठिए. Yeah, it was the skill of Monu Jakar because he did not actually go to attack the right cover. He just stretched his arms and made sure he got that center position on the attacking form. That was really nicely executed by Monu Jakar. Sonal Apple once again gets the running hand touch finally on that left flank. Left raider goes in straight towards him, and the hand stretch gets Manoj Yadav from the left corner out on the bench. Just talking about Monu Jakar once again. See, it's another big opportunity for him as well, because when there is no Ashish Arwal, you can rely on Rinku, and then when Rinku is struggling, Monu Jakar needs to come out even better than what he just performed. And Nitin Deswal taking a revenge back and saying, okay, this is what I can do. And the cover combination tackle, look at that. The right cover going for the body and the left cover going for the legs. And near image score. ये परफेक्ट फ्रेम वहां पर आपने देखा, और इस तरह के फ्रेम आप देखना चाहते हैं, परंतु रोहित राघव दर्शा रहे हैं कि वो बतौर रेडर भी कितने कारगर साबित हो रहे हैं यहाँ पर लगातार हम्पी हीरोज के लिए, और आसानी के साथ वहां पर पॉइंट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं. इस बार फिर से यहाँ पर शिकार बनाएंगे एक बार पुनः पेरियार पैंथर के खिलाड़ी को. He sometimes reminds me of I can even say I was thinking if our Dakar Daya is like Ajay Thakur, but sometimes I'm not comparing Rohit Raghav to Ajay Thakur, let me not put it in a wrong way, because it's a very big comparison, but I'm just saying the calmness, the coolness of the Padma Shri Ajay Thakur is there in Rohit Raghav, because he can be there for the tackle, he can bring in a lot of calmness that is required for the side, he can go in and raid, and even when he raids, he does not sweat. He makes the defender sweat. Look at that. Very minimal footwork. And then super tackle situation. Can he make this happen? Oh, that was very close. He's still struggling. He's still struggling, Rohit Raghav. And he's cleaned him up. It is a super raid. And he's got an all-out as well. A 5-point raid. And I was just talking about his coolness and calmness. Look at what he has done. He has just... I guess I have no words. He's just bulldozed it off.
फिनोमिनल नवीन, फिनोमिनल। देखिए जिस तरह से वो सफर ही क्या, जिस सफर में आपके लिए कांटे न हो, राहें जिस तरह से ये बना रहा है खिलाड़ी, उन कांटों को तोड़ मरोड़ कर, और इंस्पिरेशन की जिस तरह से हमने बात की, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से कूल एंड कंपोज वहां पर नजर आते हैं अक्सर आपको कबड्डी के मैट पर। एक बहुत बड़ा नाम आपने लिया अजय ठाकुर, और निश्चित तौर पर उसी तरह से बताना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को कि युवा कबड्डी सीरीज के इस बड़े मुकाबले को देखने के लिए आ चुके हैं यूपी योद्धा के आन बान शान, एक ऐसे कप्तान जिन्होंने क्या लाजवाब प्रदर्शन दर्शाया है, और एक ऐसे खिलाड़ी जो बाकमाल इंसान भी है, शानदार प्रदर्शन अक्सर दर्शाते हैं कबड्डी के मैट पर। जी हाँ नीतीश कुमार नवीन। Yeah, very much. The UP franchisee was completely taken by storm by that superstar. But then again, Sonu Latwal needs to find some sort of way to get that speed going in his body. Yeah, good footwork, but then once again, Monu, in fact that was Manoj Yadav, who had so much time to turn him around. And who's coming in? Yeah. That is nice to see where Ujjwal is making his way back in. जी अब उज्जवल, No, I guess. Yeah. अब उज्जवल जरूर यहाँ पर आपको नजर आएंगे राइट रेड करते हुए। जी हाँ नवीन, आप Yeah. कुछ कह रहे थे, वो कुछ पॉइंट रखना चाह रहे थे। Yeah, where, oh, look at this, right cover, so easily done on Ujjwal. So, yeah, I'm just saying, where you see such big players, when you have so many big superstars coming and watching you, you need to show that intent. Yeah, correct. The intent, first of all, is very right. But then, the superstars will see the killer instinct in you, the never give up attitude in you, the do anything to win attitude. And now Akshit once again dashed away. See, this is the problem. He's not learning from his mistakes. Just showing the footwork only in the left flank, and it has got so much time for the left cover to come over and dash you across. You can't just have a footwork in one angle of the right corner. And every time that he is tackled today, if you can just pull out all the replays today and watch it after the match, and you will find Ramesh Narwaji sitting with Akshit. Every time he's been dashed out of the lobby from the left cover. And once again, look at the surprise ankle hold from Rohit Raghav. परंतु पिछली बार जरूर वहां पर अक्षित पॉइंट लेकर गए थे अपनी टीम के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि डैश उनका किया गया था उसी तरह से लगातार, हालांकि वहां पर अक्षित को एक पॉइंट जरूर मिला था, और इसी वजह से आपको पुनः एक बार ये रेड करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल जो आपका कहना था वो पूर्णतः सही था कि जिस तरह से गलतियों से सीख लेना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और लगातार आप सीखना चाहते हैं, गलतियों को न दोहराना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और चलिए इस बार नहीं दोहराया है गलतियों को, अनीश यहाँ पर एंकल होल्ड करने का प्रयास था, परंतु चलिए पहले एंकल होल्ड के चंगुल से बचाया और आसानी के साथ मिड लाइन को क्रॉस किया और एक पॉइंट अपनी टीम के लिए लेकर जाते हुए। Yeah, it's a cultural point of नहीं पैर मत छुओ मेरे बेटा. That's what it was. As Ashish Narwal always does that. It's a good skill. See, that's what I'm saying. He's got good sparks. He just needs to nurture that. He just needs to polish that even stronger. As Rinku gets caught in a chain tackle from the left cover and the right cover. Proper chain tackle, no problem whatsoever. More so for the left cover coming across. और अब थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करते हैं नवीन, रिंकू के बारे में आपने लगातार वार्तालाप की है, इस बात तो चले रोहित राघव एक बार फिर से पॉइंट लेकर जाएंगे। And what will Ankit Surendra be saying today? he never expected Rohit Raghav to come and attack him so many times, isn't it? He's not tackled him even once, and that will be. See, that's what it is. That's the psychological advantage what a raider will have. If he's getting some points against one defender, you keep on targeting that defender always. That's what happens, and the defender, gets bogged down. There is where you need to come up and say, okay, what you are made of. What is your killer instinct? That is what I'm trying to talk about here. 33 for the Humpy Heroes in the first half that's gone by, and just soaking in some highlights, we just see how somewhere Nitin Dhamakedar Thankar started off the proceedings, and then it was all Rohit Raghav, and of course Akshit coming into his own. And when you raid so many times, you as a raider will have to find out ways to get some points. See, I understand you've got 2 raid points, Akshit, but you've been dashed out also in the same corner, in the same right corner and the right flank, and where your left cover is coming against you.
So what you have to do, you have to run, you have to have that running hand touch, show your footwork throughout the back line, not just towards the right corner. So those are all skills that need to be spoken to, with the coach. And this is the Lattu effect. This is what I was talking about, the Lattu effect. और बिल्कुल जिस तरह से आपने बहुत सही उसे बताया, सही तरह से समझाया हमारे दर्शकों के लिए कितना आसान वहाँ पर होता नहीं है। और ये वो रेड थी, ये वो रेड थी, ये वो स्ट्रगल था, ये वो सफर था यहाँ पर रोहित का, कि जिस अंदाज में दर्शाया नेवर गिव अप एटीट्यूड। चाहे आपकी टीम कितनी भी अच्छी परिस्थितियों में क्यों न हो, परंतु जिस तरह का नेवर गिव अप एटीट्यूड यहाँ पर नजर आता है रोहित रागा का, वो सच में लाजवाब है। और लगातार अंकित सुरेंद्र को हमने फर्स्ट हाफ के दौरान आपने हाईलाइट में भी देखा होगा कि लगातार अंकित सुरेंद्र सरेंडर करते हुए नजर आए हैं यहाँ पर उनके विरुद्ध, और पूरी तरह से कहानी व्यतीत करती है ये हाफ। और आपके सामने जो ग्राफिक्स हैं 33-15 हम्पी हीरोज के पास 19 रेड पॉइंट्स है महज 9 वहाँ पर पेरियार पैंथर्स 8 टैकल पॉइंट्स 5, 2 बार ऑल आउट भी किया है हम्पी हीरोज ने पेरियार पैंथर्स को। We just slip into that all important shot, little break and come back after the second half whistle has been given on Franco. Stick along with us. और चलिए सेकंड हाफ में स्वागत करते हैं हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से। बड़ी जल्दी हम पुनः आप सभी के साथ अवगत हो रहे हैं, और ये कहानी जरूर सेम है, ये कहानी जरूर एक बार पुनः दोहराई जा रही है। हम्पी हीरोज बड़ी ही जल्दी यहाँ पर सेकंड हाफ की पहली रेड में ऑल आउट करते हुए आपको नजर आएंगे पेरियार पैंथर्स को। और चलिए नवीन, अब मैं चाहूंगा जिस तरह से आप हमेशा कहते हैं कि जो टीम लैगिंग बिहाइंड जो थोड़ा सा पिछड़ रही है उनके बारे में आप अक्सर बात करना पसंद करते हैं, आज मैं जो टीम पिछड़ रही है उसके कप्तान के बारे में आपसे वार्तालाप करना चाहूंगा। क्या आप उनसे अब वो किलर इंटेंट की आप बात कर रहे हैं, किलर इंस्टिंक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आप वो डबल एनर्जी अब आप उस खिलाड़ी से देखना चाहते हैं? पूरी तरह से अभी तक विफल होते हुए नजर आया रिंकू का खेमा। Absolutely. And Humpy Heroes have just inflicted Nitish Bora, or is it Nitish Bura if I'm not wrong? Yeah, it's Nitish Bura. First time he is coming onto the mat, and the jump from Sagar was not enough. See, I'll tell you something. Where they'll be really lethal now, the Periyar Panthers is with quick raids and trying to control the game by not getting tackled. See, I understand it is not easy to get you the raid points. Even Rinku or even Sagar at that point of time, I understand you want the raid points, but somewhere just don't get tackled for 1 or 2 tackles. Just see how the defense plays on. And Akshit once again gets that point. And the defense also, when Manoj Yadav can put in such lovely tackles, why give such easy points to Akshit, who's growing into confidence? And I'm not taking away any credit from Akshit though. Akshit is really doing it well. But as a defensive unit, when your raiders are struggling, try support the raiders. And Monu Jakar, once again, it's okay if you don't get the raid points. Try and not get tackled out. Try and see what the defense will do from the opposition. You know? And look at this. Goes in for the bonus, goes in for the turning bonus, gets 1 point, and the defense making an error. That gives you 2 points. That's really well done by Monu Jakar. See, he just went for the bonus, and look at the defensive error that is coming in, even with Humpy Heroes. That is Kabaddi. The defense is always prone to make errors, and that's what I always keep saying. The raiding will win you wars, but the defense will win you battles. एग्जैक्टली नवीन, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने जिस तरह से फ्रेम किया उसे, क्योंकि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है बतौर रेडर, आप जरूर पॉइंट लेकर आना चाहते हैं, परंतु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका यह है कि आप टैकल न हो जाएं। और लगातार जब आपके लिए ऐसा ही वहां पर समीकरण बन रहा है कि आप लगातार वहां पर विपक्षी खेमे में जाकर टैकल हो रहे हैं, तो कभी कभी आपके लिए ये भी आवश्यक होता है, जिस तरह से अक्सर कई खिलाड़ी खेलते हैं कि आप ऑफलाइन पर जाइए सिर्फ बोनस का, जिस प्रकार से पिछली बार वहां पर मोनू जाकर ने प्रयास किया और डिफेंडर्स ने गलती की, तो आप उसका इंतजार करें कि डिफेंडर्स आपके पास आए और आप चौंकाने रहें और आसानी के साथ वहां से फिर अपनी टीम के रेड पॉइंट्स लेकर आए। कुछ एम्प्टी रेड जो भी जाए तो भी अक्सर नवीन वहां पर 15 मिनट 20 मिनट का समय इतना होता है कि आप 15 से 20 पॉइंट की लीड को कम कर सकते हैं।
धीरे धीरे अगर आपके पास एक दफा मोमेंटम आ जाए। और अब चलिए यहाँ पर रोहित राघव, जिनको बहुत ही अव्वल दर्जे का प्रदर्शन करते हुए अक्सर हम देख रहे हैं, पहले प्रदर्शन कर रहे हैं। Yeah, see, that's what he'll do, Harshit. He will not go for the points because he knows that it's a very big lead. It's a big lead that they've got, 20-point lead, and he goes back. See, that is the calmness that he brings in. So when you do not get the points, I know you have to try and just play on the do-or-die rate strategies as well. See now, it is a tough challenge for the Periyar Panthers, as you've got Ujjwal and you've got Nitin watching around. Look at that! See, this is what happens. The defense, you did not even go to try to get a point. Show your footwork, have that snappy rage, and Rohit Raghav says, see, it is not easy against the defense because you've been watched always. Of course, there are so many cameras, you've been watched worldwide on Fanco, that's one thing. But you'll have to be worried about the 5 or 6 defenders that is watching you. Akshat now tries and turns and tumbles across the midline and he gets 2 points. The defensive errors should understand that, especially Manoj Yadav should understand, Akshat is not an easy raider to tackle. प्रॉपर टाइम पर जहां पर टर्न होने की आवश्यकता थी वहां पर जाकर अक्षत ने बिल्कुल सही समय पर टर्न लिया। जब वो चेन वहां पर मौजूद थी, हालांकि चेन टैकल की तरफ जा रहे थे, धीरे धीरे मनोज यादव ने शुरुआत में प्रयास किया और अक्षत बिल्कुल आपने सही कहा, कितने आसान रेडर जितने वो लगते हैं टैकल करना उतने हैं नहीं, परंतु चलिए बिट्टू इस बार फिर से शिकार जरूर बनते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर तुरंत ये नवीन, आप इस परिस्थिति को ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। That is really smartness at its best level for Kabaddi. See, this is really well done. Monu Jakar goes in and then the right corner comes across and then jumps over. I do not understand why Bittu did that. But then when Bittu did that, he was out of the game. And Monu Jakar went back for another point. See, the points will come if you just stay on. And that is the team which is leading by what? 20 points? And look at the defensive errors that's happening. And the defense of the Periyar Panthers should understand, leave Akshit alone. Yeah, he looks like really that, tomorrow it is his +2 examinations and he's come prepared for everything. I guess he's just doing his +2, 10th +2, and he looks so young. And I love youngsters performing so well. And he's actually impressed me today than the other match that when he was playing against the Murtal Magnets, where he put out that one raid which was not in the spirit of the game. Today, he's got my respect. He's got my complete appreciation, Akshit. Really well done. But the defense of Periyar Panthers should understand that don't go attack him. And that is how they have been losing defensive points. This game is still on. Periyar Panthers can still make a comeback. परंतु इस तरह से गलतियां नहीं दोहराने वाली बात को भी समझना होगा। लगातार अगर आप इस तरह की गलतियां दोहराते हुए नजर आएंगे, एक बार फिर से यहां पर गलती नजर आएगी आपको। वहां से कॉर्नर के खिलाड़ी ने प्रयास किया, बिल्कुल वहां पर शायद सागर मौजूद थे और सागर के लिए बिल्कुल भी वो दिन ऐसा रहा नहीं है, बिल्कुल ऐसे सागर के तौर पर प्रतीत हुए जिसमें पानी हो ही ना। अब रिंकू जरूर यहाँ पर वो भी पूरी तरह से आज ऑफ कलर यहाँ पर नजर आए हैं, लगातार प्रयास करते हुए जरूर नजर आए हैं इस बार बिट्टू के विरुद्ध वहां पर जाकर। ओ ये तो आपने आसानी से पॉइंट दिया है और इसी की आप बात कर रहे थे वहां पर नवीन की, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आप सिर्फ वहां पर मैट पर खड़े रहना आपके लिए महत्वपूर्ण है। मतलब खड़े नहीं रहना है, मतलब फुटवर्क दिखाना है। खड़े रहेंगे तो डिफेंस आपको लपक लेगी, लेकिन मैं क्या बोल रहा था, just show your footwork, just try and have that intent. Don't get caught, don't get entangled in the Chakraview. See, I understand it's very easy to sit in an AC room and speak on the mic, but that is what it is. And as I say, that's what is happening for the Periyar Panthers as Raiders. See, they are not trying to put a lot of effort and the defense is making errors. And you will have to let Rohit Raghav not get these points. Look at how deep he's gone and he's targeted whom? The captain of Periyar Panthers, the only top Raider. Rinku is out on the bench. And watching all this is our respected Raju Lalji, the Indian player for Rajasthan Police, and also Nitish Kumar, as we mentioned, the UP franchisee captain. See, when they watch all this, they will not just, of course they will enjoy the game, one. Two, you will be also watched
by them with the scanner of an eye saying how good you are when the situations are against you. And Akshay, come on, Mono. I'm just saying Manoj Yadav. I guess this is the fifth time or the fourth time that he's going to attack him. He has to understand that Raider will look that he is just a 10+2 kid, but he is achieving his degree in the raiding department today for the Humpy Heroes. बिल्कुल, आज जिस तरह से उन्होंने लगातार प्रदर्शन किया और पिछली रेड में तो ऐसा लगा वहां पर कि मनोज यादव छोड़ने आए हो कि चलिए बाय बाय अक्षित, आपको मैं छोड़कर आता हूं मिडिल लाइन तक। इस बार जरूर यहां पर अनीश ने अपनी रेडिंग स्किल्स दर्शाई, क्या रेड डिफेंडर के साथ साथ अगर महत्वपूर्ण समय में रेड करने का मौका मिले। पर चलिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर लेकर आए पेरियार पैंथर्स के लिए, जिससे कि एक बार फिर से सुपर टैकल का मौका होगा। रोहित राघव शानदार रेडर आज नितिन धरकर को जब सब्सिट्यूट, परंतु चलिए अनीश की यहाँ पर कमजोर कोशिश और जिसके चलते आसानी के साथ एक और पॉइंट रोहित राघव के पास। The more cool and calm he is, he can also get so dangerous. The anti-block, the dash was there, but then the left hand of Rohit Raghav just blocking Anish in the way, and then goes towards the midline of the backtracking skills. Once again, a point for the raiding department. Bonus +1. That's nice to see. As Monu Jakar does that beautifully well. Right cover, went in properly towards the cutting of the angle, not getting it right. As once again Akshit makes his way in. Tinku was the defender on that previous occasion. But now see, it is super tackle situation. Sagar, come on. Now what do I say? Harshit? देखिए पूरी तरह से आज अंकित सुरेंद्र निश्चित तौर पर लगातार सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये वो खेल कबड्डी का नहीं है जो आप एक्सेप्ट करते हैं पेरियार पैंथर से। नवीन, देखिए ये वो पेरियार पैंथर नहीं है जिन्हें हम देखने जा रहे हैं, और जरूर यहाँ पर आप उनसे बेहतर देखना चाहते हैं। परंतु चलिए अभी समय है इथियोपिया स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। स्ट्रेटेजीज किस तरह से बनाना चाहेंगे यहाँ पर अब दोनों ही टीम? अगर आप यहाँ पर दोनों ही टीम पेरियार पैंथर्स की बात कर लेते हैं, चलिए नवीन क्या कहेंगे उनके बारे में? Some organic food really required in the raiding department, and especially more organic approach required when your defense is doing so badly against Rohit Raghav. 14 raid points today, and look at that, the strike rate is over 100, so that means he's just put in 13 raids and he's converted 14 of them. I mean, that is phenomenal, isn't it? That is something that you wanna have that raider in your team, and that's why Bengal franchisee is so lucky to have him, especially this raid. This is the struggle of the challenger round itself. This is not the struggle of this match. That's the best raid of the whole challenger round for me. And look at his kabaddi brains. He always is so agile and alive to the situations. And as I say, a lot of organic approach required by the Periyar Panthers as we are just going in and finishing that strategic timeout. Done and dusted. That is really important now for Periyar Panthers to at least put up a fight. See, I understand when the Raiders are doing well. The Raiders have started to do well for Periyar Panthers. Now the problem is with the defense. Manoj Yadav is playing ego-filled kabaddi. He's taking revenge on Akshit. Cannot be doing that. As a defender, you cannot do that. You can't play personal kabaddi. It's a team game. You'll have to let Akshit go. जी हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा नवीन कि आप कभी भी सेल्फ फोकस होकर कबड्डी खेल सकते नहीं। आपको हमेशा टीम के बारे में सोचना होता है। वो जो मैं वाली जो चीज़ होती है वो आप हमेशा बाद में रखना चाहते हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि रोहित राघव की आज जो स्ट्राइक रेट अबव 100 रहती नजर आई है, क्या शानदार प्रदर्शन वो लगातार कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, और एक और बार पॉइंट लेकर आएंगे। और बिल्कुल आपने हमारे गेस्ट के बारे में भी बात की थी। गेस्ट चलिए इससे पहले इस रिप्ले में एक बार फिर से मोनू जाखड़ को अपना शिकार बनाया। राजू लाल चौधरी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इंडिया कबड्डी प्लेयर, और साथ ही साथ राजस्थान पुलिस में वो एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर अपनी सर्विसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। Yeah, and now it is all down to Sagar. See, Sagar will be watched with keen eyes by the dignitaries and all the kabaddi fans watching world over this on fan court. If Sagar can save Periyar Panthers, come on. You at least allow me to complete my sentence. See, that is what it is. That's what shows you what you made of. It is not as a surrender raid. You just will. I understand you are down and out. I understand you are low in confidence. I understand that this day is not yours. But at least that raid
you could have become a hero. See, there are so many matches that we have seen on the Kabaddi mat that people lose. And now see, Sagar wants to be a hero in the tackle, in the defense. Now, first of all, tell me, are you a raider or a defender? You are guarding right corner today. Fine, agreed, completely agreed. But predominantly, are you a raider or are you a defender? And if I am a franchisee owner and I want to pick you in my side, what do I have to take you as? Isn't it? See, that is what these lads need to think about. Yuva Kabaddi series is watched by the world. The Kabaddi world has completely put its thinking, strategies and eyes behind this big series. And when you are not sure whether you are a raider or defender, how do you knock on the doors with so much competition around? बिल्कुल नवीन, आपकी बात से 100% एग्री करते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि आप में वो क्लैरिटी ऑफ आपकी स्किल्स की, आप अपना महत्वपूर्ण कार्य कौन सा आपका वो कार्य प्रायोरिटी और आप किन मेन स्किल्स के जरिए यहाँ पर आगे की तरफ प्रस्थान करना चाहते हैं। इस बार जरूर शायद क्या एक सब्स्टिट्यूशन होते हुए नजर आएगा। हम्पी हीरोज में एक और बदलाव आपको नजर आएगा और आना भी चाहिए यहाँ पर 42 नंबर। ये अच्छा चेंज है यहाँ पर, ये अच्छा चेंज है कि अमित गुलिया को अंदर आने का मौका मिला है। जानते हैं रोहित राघव ने जिस तरह का प्रदर्शन कर दिया और एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पर अब हम्पी हीरोज आ चुके कि उन्हें दूसरे पायदान खोने का कहीं कोई भी खतरा नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर बदलाव करते हुए नजर आए हैं और यही में क्या देखिए नवीन, सबसे पहली बात तो क्या पेरियार सबसे पहले कहा जाता है वो सेल्फ बिलीव, तो क्या आज जो बिलीव सबसे पहले पेरियार पैंथर्स को नहीं था कि आशीष नरवाल को रेस्ट कराते हुए नजर आए, नवीन शर्मा मौजूद नहीं थे और कोच उनके मोहित हुड्डा जी यहाँ पर मौजूद नहीं आ रहे, तो क्या वो सबसे पहले सेल्फ बिलीव नहीं था कि वो 34 पॉइंट से एमपी हीरोज को पटक नहीं दे सकती है? No, it's not about self-belief. It's about you taking a day off. You know, you're taking a day off. You're just switching off from kabaddi, trying to, go back and come back fresh. Now, once again, how many times has Manoj Yadav faltered in doing this? How many times has Manoj Yadav tried to show that he can dash Akshit? And this is what I say. He should stop playing self-obsessed kabaddi. That is not what you want to see. See, that is what I'm trying to say, where even Ashish Narwal or even Naveen Sharma or even Mohit Huda Saab, I guess they should be resting today even without practicing, just taking the time off. It's very important to switch off and switch on, and you have tomorrow another day to practice and then come back to the summit round day after tomorrow. So it is that sort of a phase where you will be switching off and switching on, and that is the right time for people like Manoj Yadav, for people like Sagar, for people like Ujjwal to come into good effect and take that opportunity and be ready for this. It is not easy. I'm telling you something. See, this is just the first edition of Yuva Kabaddi series and we have seen so many talents come up. And imagine, just imagine, even in the same year, in 2022, we will have 2 more editions if everything goes well. That's what our aim is. And at least, very sure, even 1 more edition for sure. And do you think, forget going to any franchises, forget playing India or whatever, even in the next edition of Yuva Kabaddi series, do you think, Sagar can be a good candidate? Do you think Ujjwal, Manoj Yadav, do you think all of them can be good candidates to be picked by the coaches? No matter how much ever the coach likes you. That is a strong tackle. That is nice to see. Sagar again just trying to show that, okay, he can also tackle. जी लगातार यहाँ पर टैकल करते हैं अब सागर नजर आ रहे हैं, तो एक प्रॉपर राइट कॉर्नर की तरह ये शायद अब आपको ही नजर आए, एक डिफेंडर के तौर पर आपको नजर आए। क्या अपने आप में एक ऑलराउंडर बनने की चाह है, परंतु आप सबसे पहले अपने मेन स्किल को आगे की तरफ कन्वे करना चाहते हैं। इस बार जरूर क्या एक रूट फाइंड आउट कर पाएंगे? जी नहीं, एक बार पुनः प्रयास जरूर करना चाहते थे यहाँ पर उज्जवल की, एक उज्जवल राह ढूंढी जाए, एक उज्जवल गैप यहाँ पर ढूंढा जाए, परंतु चलिए आसानी के साथ अक्षित ने यहाँ पर होल्ड किया। नंबर 1 जर्सी यहाँ पर आपको नजर आए अमित गुलिया और आसानी के साथ एक और पॉइंट वहां पर प्राप्त किया। चलते हैं नवीन उसी डिस्कशन की तरफ एक बार पुनः। Yeah, because see, under 5 minutes of game, and look at what Rohit Raghav has done, and everybody will want Rohit Raghav in his team now. Without Nitin Dhankar, without the defensive skills of Nitin Deswal, the captain himself not around, he's also substituted in. And look at Rohit Raghav. And I will put all my money, if I'm a franchisee owner, even in the big franchisee league or even in the next edition of Yuva Kabaddi series, I will put all my money on Rohit Raghav.
So that is how you grow. And look at this, Sandeep Narwal being substituted in, and so much options to Ramesh Narwal to try and test the entire bench. And that is the opportunity what Sagar got today, what Manoj Yadav got today, Ujjwal got today, and see Monu Jakar is doing it well, but not up to the mark, isn't it? Not up to the mark. See, we wanted 34-point difference in the victory, and they are, I guess, reaching 34 whole points in the whole match. Running hand touch, nicely done, turn, and 2 points. Really well done. See, Monu Jakar is doing it well. Right corner, goes and attacks the right in, and then the dash not successful. Backtracking skills using the lobby, getting into the midline. And see Akshit, for a person, for a lad, for a very, very young superstar who has been really taken for all the wrong things against Murthal Magnets. Look at what he's done today. He's become such a revelation. He's come out and said, okay, age cannot be a factor to decide. My childish face cannot be judged with my skills. And look at the way he's put up a Herculean performance today. Very well done. That is what you want to see in any kabaddi player, rather than going in for surrender rage. Monu Jakar has been pinned down. Super tackle now as Nitesh watches it out. जी आप तारीफ के पात्र की बात की यहाँ पर आपने जिस तरह से अक्षित ने प्रदर्शन किया, इस बार देखना होगा नंबर 7 जर्सी, और तारीफ का पात्र हमेशा एक खिलाड़ी यहाँ पर हीरोज के लिए बन रहा है। लगातार यहाँ पर शानदार प्रदर्शन कर रहे लेफ्ट कॉर्नर पर, और ये एक और असल परीक्षा यहाँ पर अक्षित की नजर आएगी। जरूर इन्होंने अपने बहुत इंप्रेस किया है, परंतु चलिए इस बार एक अच्छा टैकल, इस बार एक अच्छा टैकल। क्या वहाँ पर फिर से सागर मौजूद थे, और मौजूद थे तो क्या पर थे, कॉर्नर पर थे? मैं एक बार फिर से देखना चाहूंगा। जी हाँ, देखा आपने नवीन की इस बार राइट इन पर थे, शायद वहां पर राइट कॉर्नर पर रिंकू आपको नजर आए। Yeah, absolutely. See, it looks good when it pays off. When it pays off, it looks really good. But then, if it was a false tackle, if it was an unsuccessful tackle, we would have asked what was Sagar doing in the right in position. Yes. And finally, Manoj Yadav, which did not look like Sagar wanted any help in that ankle hold against Akshit. Finally, Manoj Yadav trying to go and assist Sagar. But that is what you need to leave out, isn't it? See, Monu Jakar does well once again, goes in deep, has that hand touch on the right corner, comes back successfully. So you'll have to leave. See, you'll have to do two things. One, you'll have to play like a team. Two, you'll have to just stop taking revenges. That doesn't happen in kabaddi. It definitely doesn't happen in kabaddi. और चलिए इस बार जरूर यहाँ पर अच्छा टैकल मनोज यादव द्वारा प्रयास जरूर कर रहे हैं लगातार अपनी टीम के लिए प्रदर्शन करने की। बहुत सारे टैकल्स आज उन्होंने अटेम्प्ट किए, जिसके चलते जरिए जरूर पेरियार पैंथर्स के लिए अपना हाई फाई पूरा करेंगे। परंतु इन हाई फाई के चलते आपने 5 पॉइंट लेने के चलते विपक्षी टीम को कितने पॉइंट दिया है, कहीं ना कहीं ये आंकड़ा मायना रखेगा। और अब तो चलिए हम पे हीरोज पहली बॉल आउट की तरफ यहाँ से जा रही है। चलिए मोनो जाकर का अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर लगातार दोहरा रहे हैं। इस बार ऑल आउट कर दिया जाएगा हम पे हीरोज को, और इसी अप्रोच की हम बात कर रहे थे, हम इसी इंटेंट की बात कर रहे थे जो आप देखना चाहते हैं पेरियार पैंथर से। भले ही आप वो 34 पॉइंट का मार्जिन को दिमाग में नहीं रखना चाहते हैं, परंतु आप निश्चित तौर पर जीत की भूख के साथ, पॉइंट्स की भूख के साथ, वो हंगरनेस, वो अपॉर्चुनिटी जब आपको मिली है बतौर खिलाड़ियों के तौर पर, आप उन अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर क्लिक करना चाहते हैं। और इस बार आपको जरूर अच्छा खेल का प्रदर्शन देखने को मिला है। पेरियार पैंथर्स जाते जाते ही सही क्या मोमेंटम ले जा सकती है। Very much, very much. Strong ankle hold from Ankit Surinder, and Akhirkar, definitely strong ankle hold from Ankit Surinder, and then goes out. So the all out is a very big advantage for Periyar Panthers, but it is too late. It is too late, but not a problem. At least they are fighting. That's what I like to see. That's what was very well put across by you also, Harshit. And this is what we want to see. It's not that who's winning or who's losing. It's how you win or how you lose. How you win, yes, of course you'll have to fight it really hard. But how you lose, whether are you losing it with respect or just surrendering, that is what we want to see. You know. बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत खूबसूरती के साथ आपने कहा है नवीन कि हार और जीत मायने नहीं रखती है। देखिए हार और जीत तो हर मुकाबले में आपको देखने को मिलेगी, जिस तरह से आपका प्रदर्शन है वो देखा जाएगा। और एक बार फिर से अक्षित और कौन से खिलाड़ी वहां पर मौजूद है नवीन? Obviously Manoj Yadav. Arshit, I really want to go down right now
from the commentary box and tell it in Manoj Yadav's ears. भाई ये 7 खिलाड़ियों का खेल है, ये तेरा और अक्षित का गेम नहीं है. बिल्कुल आपने सही कहा. देखिए अभी तो नहीं, परंतु चलिए 42 सेकंड के बाद प्रयास करूंगा. See, I understand it might sound a little too aggressive, or rather too tough to be so, against any one such player from the commentary box. But what is happening with Manoj Yadav? Why does he have that revenge attitude on Akshit? And he's given away so many points. He's not even tackled him even once. And he thinks, at least in the end of the game, shall I go and tackle him? That is what he's thinking, is it? What will you achieve by doing that? Tell me, what will you achieve by doing that? Because in the tackle points, what do we put in the graphics, Arshid? What do we put? Do we put which defender tackled who, or which raider got the points against which defender? No, it is just points. It is just points, and it will reflect on the team's performance, isn't it? Yes, totally agreed. कि वो सिर्फ आपके आंकड़े दर्शाएंगे कि इस तरह का आपका प्रदर्शन रहा है, और मोनू झाकर का जो प्रदर्शन रहा है वो जरूर दिखेगा कि उन्होंने लगभग वहां पर पॉइंट्स अपनी टीम के लिए प्राप्त किए हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. वो मैटर नहीं करेगा कि कौन से डिफेंडर को उन्होंने शिकार बनाया है या फिर कौन से डिफेंडर ने उनका लगातार शिकार बनाया है. एट लास्ट मैटर करता है कि यहाँ पर आपको आपकी टीम की जीत अगर प्राप्त हो रही है और उसमें आपका कितना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है. अगर आपकी जीत में आपकी टीम का वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है तो सच में अच्छा है, परंतु अगर आपके लिए आपका अच्छा प्रदर्शन रहा है परंतु वो वैल्यूएबल नहीं रहा है आपकी टीम के लिए, तो वो एक अच्छा संकेत नहीं है. नवीन. Oh yeah, absolutely. And 4-point rate, bonus plus 3 was what was awarded to Monu Jakar. And that is nice to see. See, when Ashish Narwal comes back to the summit round, you have Monu Jakar in all the confidence possible. And look at this, end of the match, 47 for Periyar Panthers. Not a bad score. I'll tell you this. But Hampi Heroes, as always, dominating this from the word go. Happy coach, happy camp, happy Nitin Deswal, the captain, coming out with laughing faces, and happy Ramesh Narwal ji. That's nice. They secured the second place, and they will be playing against the Muthil Magnets in the first qualifier day after tomorrow. And anybody winning that match will directly go to the finals of the Yuva Kabaddi series. That is what playing 1 and 2 will give you. And even if you lose, you will have another chance to play another match to have your chances to reach the finals. Playing 2 means a you will be paying attention to one of the पूरी तरह से बयां कर दिए किस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर आपको नजर आया. जिस तरह से यहाँ पर अक्षित ने, जिस तरह से मोनू झाकर ने जरूर प्रदर्शन अपना लाजवाब किया, और क्या बात है 20 रेड पॉइंट्स यहाँ पर लेते हुए नजर आए हैं पेरियार पैंथर्स के लिए. Arshit, you promised me, Arshit, you promised me that you'll go talk to Manoj Yadav. Absolutely, Naveen. For sure. I will take a selfie with him too. नहीं. Selfie तब लेना जब his performance is making the team win, not for a high five. आपको assurance कराने के लिए मैंने उनसे वार्तालाप की है. अच्छा, इसके लिए. See, for me, that's what matters. Your super tens, your high fives doesn't matter. If your team is winning with your even 4 point in a tackle points, even 8 or 9 points in your raid points, if your team is winning, that is what matters to me a lot, apart from your high fives. And that's why, have you ever seen me even concentrating on the number of super tens or the number of high fives when we talk about the data or when we talk about something? No, see, that is just there. That is for the records. It's fine. It is required. Yes, it is required for the records. But team has to win. At the end of the day, team has to win. But Hampi Heroes 60 points. Really well done. So Muthil Magnets and Hampi Heroes at the top of the table after the last match of the challenger round. So they will be playing the qualifier 1 in the summit round. And the Kaziranga Rhinos and Aravali Arrows will be playing the other matches. And then Periyar Panthers and Tadoba Tigers have taken the long route. They will be coming in a bicycle, and that is what I was trying to say. Yeah, that is qualifiers 1 will be played by Muthil Magnets and Hampi Heroes, and qualifiers 2 their
So anybody winning the qualifier 1 will go directly to the finals, and that is happening on the 30th. Qualifiers 2, winning team will be having another chance to play to the losers of the qualifier 1, and then even if you lose in the qualifiers 2, you will have a bigger route to follow. You will have a bigger route to follow once again. And in eliminator 1, anybody losing that match has to pack the bags and go back home. That is what it looks like. So everything is set for the summit round starting day after tomorrow. We will take that all important break that is required for tomorrow, and we will come back fresh. Harshit will go talk to Manoj Yadav now. And thank you so much everybody for joining in. Harshit. I'm on my way. Yeah, just joking. Thanks a lot. This is Navin Chaudhary signing off along with Harshit Sharma. See you soon tomorrow in the summit round on Fan Code, live and exclusive.